Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the basic question that we need to prepare for MEG 14. सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए या बात की जाए सर, कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा है। आप क्या है, हमने पेपर लिया, मैंने आपको बताया था कि पेपर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सर प्लीज आप इसमें हेल्प करेंगे, क्या पेपर पैटर्न वाला है, कैसे हम इस पेपर को डील कर पाएंगे। As you can see that MEG 1, 2, 3, 4 have plenty of videos, but while talking on the second year, हमारे पास बहुत लिमिटेड वीडियोस हैं। Don't worry guys, I'm here to help you out from all the troubles। तो पहली चीज क्लियर करते हैं, यहाँ पे हम बात करें किसकी, आज हम बात करें MEG 14 की। तो सर इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या चीजें हमें आनी चाहिए, वो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या होगा एग्जाम पेपर पैटर्न, उसको कैसे डील करना है, वो इसके लिए क्या कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी है। तो सर जो इसकी पोएट्री है वो ऐसा लग रहा है कि यार दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहां से ली गई, क्या कॉन्सेप्ट है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा। एंड हाउ गोइंग टू प्रिपेयर, तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेट देखूंगा कि आप लोग कितने कमेंट करते हैं कि मुझे चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर जो कंप्लीट है, पूरी सीरीज तैयार हो चुकी है, इसका पूरा पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जान लेंगे पेपर कैसा आने वाला है, क्या बेसिक्स है और आपकी प्रिपरेशन क्या है। If you really think that कि ये पेपर इजी है या मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा या मेरे से होगा या नहीं होगा, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सारे क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हो रहा है, नहीं हो पा रहा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आए, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऊपर, आप वहां पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, जो आप नहीं करें अभी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में आए तो शेयर करें बाकी लोगों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो पाए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा विद द नेम ऑफ क्लासेस राहुल। शुरू करें, यहाँ ऑलरेडी टाइम खराब करते हुए बच्चे बोलेंगे सर टाइम बहुत वेस्ट करते हो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्लियर था, 3 घंटे का पेपर होना है, डेफिनेटली 100 नंबर का होगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ सॉलिड सी कंपल्सरी होगा, कांट चेंज, तो ये आपको करना है। डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ कंटेंट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, कोई चार, सर कितनी होगी सर, ऑलमोस्ट 5 से 6 आपको आर्टिस्ट दी जाएगी, जिनमें से कोई चार एनी फोर आपको करनी। तो ये आरटीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट वहां मत लेना कि हम MEG 1 में हम क्या करते थे, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल। भाई 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का तो सीधा जाओ रेफरेंस पे और एक्सप्लेनेशन, एंड दैट्स ऑल ओवर, और कुछ नहीं करना। और अगर इसमें पोएट्री का नाम पता लग गया तो पूरे चांस है कि आप क्लिक करके 5 मार्क्स। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ एक छोटा टेस्ट हो गया आप लोगों के लिए कि यार भाई ये हमें आते या नहीं आते। तो दीज आर द आरटीसीज, द क्वेश्चन 1 is all about RTCs। अब पहली RTC है आपकी, देखता हूं किस किस को आती है। All of her flesh and bones, देखो पहली लाइन से क्लियर हो गया। All of her flesh and bones they had consigned to the flames but how she continued living no one can understand। So the first, all of her flesh and bones they had consigned to the flames, but how she continued living, no one can understand। The first, I hope यहाँ पे आपने क्लियर कर ली कौन सी पोएट्री है और कहाँ से लिया गया। Come up to the second one, here we are, the eagles crying out and sharp shell the eagles of the underworld burst into
the sky. So the second one we are having the eagles crying out in sharp shrill notes. The eagles of the underworld burst into the sky. Come up to the third. How can I write? How can I write the alphabets? मेरे ख्याल से पहली लाइन में क्लियर हो गया होगा ये वाला आपको. Of the next. How can I write the alphabets of the constellations on the old papers? And then come on to the fourth one. Here we are. Our children are about to enter. Those lonely kitchens, these lonely kitchens tell you the name of the poetry. Come, for their sake, let's demolish these kitchens now. So our children are about to enter those lonely kitchens. Come for their shake. Let's demolish these kitchens now. Come up to the next one. The second last. Such conflict in the heart is together now. I do not know if on a bend of my life or the path of river discomfort lies in ambush. The last we are having for the choice, and it's the easiest one. I have handed over my notebook. So guys, your job is to fix out any four and identify, then give the reference and the explanation, so that really you're going to get 20 out of 20 in this particular question. I hope आप लोगों ने उतार लिया होगा. अभी तक नहीं उतार तो please take a screenshot so that we can go ahead. So guys, time to discuss the second question, and that is from the most expected play of your course, none other than Samaskara. Question number 2 we are having.
Samaskara is at the interface of tradition and modernity and explores traditional societies potential to question itself and move ahead. Incorporating necessary changes. Discuss. So we are having the question. Samaskara is at the interface of the traditional modernity and explores our traditional society potential to question itself and move ahead, incorporating necessary changes. Discuss. Come up to the next question, that is the choice question we are having. Write on that one too. That be an easy question. Explain the title of the novel Thomas, or Thomas we can say. No, this is Thomas, as exactly right, Thomas. Explain the title of the novel The Thomas. So guys, this is the next question. Come up to the next part, that is question number 3. How has Grish Granat treated the theme of power? How has Grish Granat treated the theme of power? Or the choice question we are having. In what way is Tughlaq a well structured play? Make sure क्वेश्चन थर्ड में दोनों चॉइस तुगलक से ही होंगी. जहां बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, तो वहां पे एक होगा हमारा समझकार से, दूसरा होगा हमारा तमस से. लेकिन जब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की, तो वी आर हैविंग आ तुगलक इन बोथ एंड्स. एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अब ये आएगा आपका शॉर्ट स्टोरी से, इसको पहले क्लियर करेंगे. Here we are having birthday is a typical. अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा तो प्लीज गाइस वॉच द स्टोरी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. Birthday is a typical of the stark reality. Typical of the stark realism or reality, you can say.
The early Bashir practiced discuss. Oh, we have the choice question. It's here. Describe the characterization of the protagonist in Indra Goswami, The Empty Chest. I repeat, describe the characterization of the protagonist in the Indra Goswami, The Empty Chest. I hope आपने सारे के सारे क्वेश्चन उतार लिए. नहीं उतारे तो take a screenshot so that I can go ahead and work out the. So guys, the last question we are having, the question number 5. इसको क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. It's Amrit Roy has presented Premchand as a commoner, extraordinary. Yes, this is the most expected question from this paper. Commoner, extraordinary. Discuss. The choice question we are having, the last question. Can the piece on Ishmat, can the piece on Ishmat be regarded as social document, recording the values, and conventions of the contemporary society. So this being the last question. Comment on the piece of Ishmat be regarded as a social document regarding the values and the conventions of the contemporary society. So this be the way of the paper of yours, MEG 14. अब क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, you know the guys. अब फैक्ट्स को क्लियर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ. कमेंट बॉक्स आपके पास है, जस्ट पुट अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.